Assalamu alaikum viewers, welcome to the EK kitchen. आज हम बना रहे हैं चॉकलेट लोफ केक। ऐसा केक जो आप अपनी टी पार्टी पे, हाई टीज पे सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 175 ग्राम्स ऑफ बटर, सॉफ्टन बटर है ये। कास्टर शुगर 100 ग्राम्स, ब्राउन शुगर 75 ग्राम्स, One eternity later. After beating it for a good 5 minutes, हम इसमें 3 अंडे 1 by 1 डालेंगे। Now we will add half teaspoon of vanilla essence, half teaspoon of chocolate essence. Chocolate essence is optional. If you don't have it, you can omit it. I shall take a little bigger bowl. It is looking little splitted, but it doesn't matter. It doesn't make any difference. Now we can add the cocoa powder, the almond powder, these are just regular almond. I have grinded in my coffee grinder. Cocoa powder was 4 tablespoons and almond powder was 85 grams. This is 140 grams of flour. I just add 1 teaspoon of baking powder to it and just mix it. I also have 100 ml of milk and 50 ml of chocolate chunks. We are also going to add these to the mixture slowly. I'll scrape it from everywhere evenly. Now we just add the chocolate chunks. These are little big and small. It's up to you. You can use chocolate chips as well. And these are semi-sweetened chocolate chips. It is very yummy and healthy cake. You can bake it for your kids' lunchbox as well. Here I have a 9 by 4 inch or 5 inch loaf tin.
You can just add this to the tin. Now we are going to just pat it and going to bake it between 180 to 200 degrees Celsius for the good 40 to 50 minutes is according to your oven. अच्छा, अब जो है वो हम अपना केक ओवन में से बाहर ले आए हैं और इसे डिश आउट भी कर चुके हैं। अब जो है हम इसके ऊपर गनाश ड्रिजल करेंगे और इसे हल्का फुल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा डेकोरेट करेंगे और ताकि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। ये हमारे पास हैं रोस्टेड आलमंड्स, जिसे मैंने ओवन में रोस्ट कर लिया है चॉप करने के बाद। इसे हम अपने केक पे स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो बच्चों के लिए स्प्रिंकल्स भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। मैं भी इसमें थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी। और ये केक बहुत स्वीट नहीं होता, ये थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा बिटर टाइप, ताकि बहुत ज़्यादा जो लोग स्वीट पसंद नहीं करते तो ये उन लोगों के लिए भी आइडियल है। और बच्चे तो इसे लाइक करेंगे ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिंग है चॉकलेट की। और अब आपका केक रेडी टू सर्व है।